Study visa magnification is how much? H dash by H, which is equal to V by U. We can use this and we can use the length formula. Using both, we can get the answer. Do it quickly. You can do it fast. Getting the answer? So minus 10 centimeter. Minus. No, 10 is the focal length. If you put it at minus 10, image size will be infinitive. Very, very highly enlarged. Here you want only twice. So M is equal to V by U. There are two locations for real image. M will be minus of 2. Therefore, minus 2 is equal to V by U. V is minus 2U. Using length formula, V की value minus 2U put कर दी. ये U as it is. Calculate करना है. F is 10. 1 by 10. So minus to U LCM लिया, माइनस को ऊपर शिफ्ट करके to U LCM लिया, या -1 -2 is equal to 1 by 10. So U is equal to -15. Therefore, add 15 centimeter from length between F and 2F है ना. एक इमेज तो F and 2F के बीच में ऑब्जेक्ट को रखने में आती है, that is real one. That is what is this one. यहाँ पे देखो, ये F and 2F के बीच में ये 4th पोजीशन पर है. इसकी इमेज यहाँ इन्वर्टेड है, real. Second one will be within F, यहाँ और लेंस के बीच में ये. इससे बड़ी इमेज बनेगी इधर, but that will be virtual. So let's see. Second one is for virtual image. M is +2. Therefore, 2 is equal to V by U. V is equal to 2U. Putting the value in the length formula again. 1 by 2U minus 1 by U is equal to 1 by 10. LCM लेंगे 2U यहाँ पे 1 minus 2. U is equal to -5 centimeter. Therefore, 5 centimeter from length. दो आंसर आ रहे हैं, एक फोकल लेंथ के अंदर और दूसरा फोकल लेंथ से
F and 2F के बीच में. In two cases we get the bigger image. Clear? Yes, sir. Further you move, दोनों सिमेट्रिकली प्लेस है. देखिए एक जो है फोकल पॉइंट से 5 सेंटीमीटर. सपोज इफ यू हैव द one is focal length से 5 सेंटीमीटर this side, another is 5 सेंटीमीटर other side, symmetrically placed. फोकल लेंथ से दोनों देखो 5 सेंटीमीटर लेफ्ट एंड 5 सेंटीमीटर राइट. फोकल लेंथ is 10, one is 5, other is 15, symmetrically placed. If you move the object closer to the further closer to the focal point, image will be further enlarged. जैसे अभी वो एक्सपेरिमेंट में दिखा रहा था 12.5, ये हमने देखा था उसके एक्सपेरिमेंट में. जब डिस्टेंस जो था 15 था तो मैग्निफिकेशन ट्वाइस था. When the distance was 12.5, magnification was 4 times. It means if you move further close to the focal point, magnification will increase. All right. How is it? So one more question based on the one more relation for magnification. Like this, m is equal to f upon f plus u. V के terms में ये होगा. So using the length formula, multiplying both sides in numerator by u, और ये -1 हो जाएगा. इस यहाँ पे -1 हो जाएगा. इसको इधर शिफ्ट कर देंगे. LCM लिया and invert कर दिया. ये this and this is inverted. V by u is equal to f upon f plus u. तो ये आ जाएगा. यहाँ पे माइनस आ रहा है. लेट्स चेक इट. अच्छा ये प्लस आ रहा है बीच में. u के टर्म में प्लस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा. v से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 हो जाएगा, इधर आ जाएगा. माइनस b by u is equal to v by f minus 1. LCM लिया f v minus f. ये माइनस इधर शिफ्ट कर देंगे. f minus b हो जाएगा. दिस विल बिकम m. तो दिस इज द अदर फार्मूला. इससे भी निकाल सकते हैं हम यहाँ पर. ये m इज इक्वल टू 2 पुट कर दो, सॉल्व करो u आपका, और f10 पुट कर दो, u15 आ जाएगा. यहाँ पे m प्लस 2 पुट कर दो तो u5 आ जाएगा. But this is not the standard formula. This can be used for NEET and JEE. ठीक है. You have to solve it like this in your board examination to get the full marks. Let's see further. How to solve this question?
Yeah. Could you understand the question? कौन सा फार्मूला लगेगा उसमें? Are you there? Yes, sir. Which formula do we use here? बोले. Anybody? Lens, can we use the, this is a question of lens, can we use the lens formula? Yes. No, we can't. Why? Because in our course, thin lenses are there. This is thick lens. What we have to do, we have to solve the way we have solved the, we have done the derivation of lens maker's formula. We have to go back to the basics, use the refraction at a spherical surface and get the required result. तो लेंस फार्मूला नहीं यूज कर सकते यहाँ पे बिकॉज इट इज थिक. वी हैव द थिन लेंसेज इन कोर्स, तो स्फेरिकल सरफेस वाला फार्मूला यूज होगा. व्हाट इज दैट फार्मूला स्फेरिकल सरफेस का? n2 by v minus n1 by u is equal to n2 minus n1 by r. ये फार्मूला पहले लेफ्ट सरफेस में लगाएंगे, फिर उसमें से 5 उसका जो v आएगा सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, बट उसमें से 5 सेंटीमीटर माइनस हो जाएगा. डायग्राम देखो ऐसे आएगा. कैन यू सी? डायग्राम दिख रहा है आपको? पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे गई, तो ये जो इमेज बन रही है इंटरमीडिएट इमेज आर डैश, वो सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, फिर सेकेंड सरफेस के लिए लगाएंगे, बट उसमें से ये 5 सेंटीमीटर माइनस करना पड़ेगा. गॉट इट? बिकॉज सेकेंड सरफेस से डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस थिकनेस 5 दी हुई है. So that's what you have to do. Otherwise, it is the question of reflection at curved surface. So let's see. If u, okay, u is given minus 20, r is 5. Using this formula, what we, ये formula हमने use किया देखो. What we get is v is equal to 30. ठीक है, 30 है, लेकिन यहाँ से 30 है, वो यहाँ से चाहिए. Now this will be the second surface. 5 माइनस कर लिया हमने. Can you see? Now यहाँ पर एक चेंज और होता है. What is the other change? Now second case, जैसे हमने derivation किया था कि now rays are coming out from lens and going to air, and it is going to the air, therefore n2 will be 1 now, n1 will be 1.5. That's what you have to remember. जिस medium में जाती है, that is n2. They are entering into the air. Refractive index of air is 1, and 1 is the refractive index of medium from which they are coming, and 1 is 1.5.
एंड यहाँ पे देखो रियल ऑब्जेक्ट ऐसे वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट इज ऑन द राइट हैंड साइड, देयरफॉर वी हैव टेकन u प्लस, यहाँ पे देखो प्लस लिया u, बट डेरिवेशन में हमने आपको डेरिवेशन में हमने एज इट इज सिंबल प्लेस कर दिया. जनरली डेरिवेशन में वी डोंट यूज द साइन कन्वेंशन. व्हाई? बिकॉज नहीं, डेरिवेशन में इंटरमीडिएट के लिए साइन कन्वेंशन नहीं यूज किए जाते. इफ यू सी डेरिवेशन, चलो डेरिवेशन देखते हैं यहाँ पर. ऑफ कोर्स वहां पर इट वाज अकॉर्डिंग टू प्लस ओनली, मतलब लाइक दिस ओनली, बट हमने वहां पे मेंशन नहीं किया वर्चुअल ऑब्जेक्ट है. सेकंड सरफेस के लिए ऑफ कोर्स वर्चुअल ऑब्जेक्ट था ये ना. Without mentioning, we did the derivation. Why? Because we don't mention, because it can be anything. यहाँ पर if it is not bending sufficiently, object can be this side also. भी हो सकता था. In that case also we don't put the minus sign, derivation में, because it can be both way. Only symbols will be replaced here. यहाँ पर जैसे हमने किया ना, यहाँ पर हमने v dash put किया. Of course it is acting as a u, and right side में है, it is according to sign convention. There is no violation of sign convention. But somebody may take as a diagram. ये तो NCERT book का. Somebody may say, okay, it is not bending enough, images from this side. Numerical में आपको ऐसा situation आ सकता है. Numerical में you have to take the proper sign convention. यहाँ पे intermediate situation के लिए both way it can go. Therefore, sometimes it may not be according to, may not be, u may not be minus, अगर left में image form हो रही. आदित्य, यहाँ पर of course we can see the image formation, and we are sure that right side में ही है. दिख रहा है हमें डायग्राम में. ठीक है, u is plus, r क्या होगा फिर? इसके लिए देखो यहाँ coming from this side और razor going like this. r के लिए आप इधर आएंगे, opposite आएंगे. Location for the center, it will be minus here, -5. These two things, this and minus. Subtract भी करना था. So after solving, what we get is 6.25. So this is the extra information to you, but we cannot say it is out of course. We have the thin lenses in course, thickness is not given, but this is not the question of lens, it is the question of the refraction at a spherical surface. Got it? Anywhere you have missed the point, you can ask. First situation was very clear. Second में हमने जैसे लेंस मेकर फॉर्मूला का डेरिवेशन किया, similar we have solved the numerical. Therefore, I was telling you, suppose यहाँ पर here is the air, this side water. How to solve? Water का refractive index आ जाएगा यहाँ पे N2 में ग्लास का आ जाएगा. For this particular portion we are going to use, this will be N2, this will be N1, this will be water, this will be glass. यहाँ पर according to that N2 and N1 will be decided. So you can manage any question if medium is different, both sides. Particularly, I am talking about the competitive examination. Both side medium may be different. So go back to the basics and solve this. This method you use it, है ना? And अगर दोनों तरफ same medium है, तो then there is the what we have done it. Water में lens था तो हमने देखा था. One was
water 4/3 and 2 was glass. Is it clear this? Yes, sir. All right. Then power of the lens is measure of its convergence or divergence. कितना converge कर सकते कितना converge कर सकते हैं या कितना diverge कर सकते हैं. It is reciprocal of focal length. Focal length का reciprocal है. More the focal length, less will be the power. Less the focal length, more will be the power. SI unit of power is diopter, or it can be per meter also from the formula. 1 diopter will be equal to 1 meter inverse. Power of the convex lens positive since its focal length is positive. Concave की focal length negative है, power will also be negative. If focal length is given in the centimeter, you have to convert it initially, or you have to convert it, or you have to use this formula. यहाँ पे हमने focal length को 100 से divide कर दिया, सेंटीमीटर में convert हो गया, 100 ऊपर आ गया. F will remain in centimeter. For example, find the power of concave lens, focal length 20. Concave lens has the focal length negative, sign convention also. तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा. Okay. Formula used is 100 upon F. F is -20. सेंटीमीटर में दिया इसलिए 100 upon F यूज किया. तो -5 diopter. Clear? Focal length, I mean power जो है reciprocal of focal length है, and you have to use the sign for concave lens. It has to be minus. If I ask you the question about the thickness of the lens, पहले ये कर लेते हैं. Let us complete this. For which color, red or violet, power of the lens is maximum? So maximum focal length के लिए I mean maximum power के लिए focal length minimum किसकी होगी? Violet color. Focal length is directly proportional to wavelength. We have done this question previous class. 1/f is directly proportional to n, which is inversely proportional to lambda. Therefore, focal length is directly proportional to red की focal length more आई थी. हमने किया था क्वेश्चन. Violet की लिस्ट होगी invisible range. तो focal length least for violet will be most for violet. Now coming to the, let us complete this point. पहले ये होगा. Before we do the combination of lenses, can I ask you what is the effect on focal length and power if thickness decreases? Question ये है, और यहाँ पे लिखो. What is the effect on F and P of convex lens? वो दोनों lenses के लिए होता है. सेम आंसर रहेगा दोनों lenses के लिए, but we avoid confusion of minus है ना, इसीलिए convex lens का दे रहा हूँ. What is the effect on focal length and power of convex lens if
thickness increases. वैसे तो thickness अपने mention नहीं है. We have the thin lenses in course, but still this question can be asked. Just let me make the more space here. All right, let me bring the question here on the fresh page. Can you think this question? जो अगर हम थिकनेस बढ़ाते हैं, पहले थिन लेंस है, ओके, तो वी हैव टू सी द रेडियस ऑफ कर्वेचर्स. ये थिन लेंस है, ठीक है, और थिक लेंस में रेडियस ऑफ कर्वेचर पे क्या इफेक्ट होगा? किसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर स्मॉल है? थिन लेंसेस के सर्कल्स बड़े बनेंगे, इसका छोटा. फ्लैट थिन लेंस इज इक्विवेलेंट टू फ्लैट लेंस है ना, फ्लैट का इनफाइनाइट होता है. ऐसे सोचे थिन लेंस इज मूविंग टुवर्ड्स द फ्लैट सरफेसेस, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज मोर, इसके सर्कल्स बड़े बनेंगे, स्फीयर बड़े बनेंगे. तो यस्टरडे वी हैव सीन, कल हमने देखा था, ओके, एफ इज इक्वल टू कितना आया था? एफ इज इक्वल टू आर आता है, इफ एन इज इक्वल टू 1.5 ऐसा कुछ आया था. इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मोर है, फोकल लेंथ मोर होगा. इसका कम है तो फोकल लेंथ कम होगा. डू यू वांट टू सी हाउ एफ इज इक्वल टू आर? एन थोड़ी देर के लिए एन इज इक्वल टू 1.5 ले लीजिए. तो लेट अस सी फोकल लेंथ एंड आर के बीच में क्या रिलेशन आता है. Are you there? Yes, sir. Okay. 1 by R1 minus 1 by R2. तो 1 by F is equal to, ये तो 0.5 हो गया. इसको R के टर्म्स में रहने देते हैं. R इज, ये पहली सरफेस का तो पॉजिटिव रहेगा 1 by R, दूसरी सरफेस माइनस माइनस विल मेक इट प्लस. 0.5 into 2 by R. F is equal to R आ गया. तो R किसका बड़ा है? फर्स्ट वन, thin lens has got more. Therefore, F is more. And thick lens के लिए रिवर्स हो जाएगा ना. For thick lens, R is less. Therefore, F is less. क्या हो रहा है? फोकल लेंथ डिक्रीज हो रही है, पावर बढ़ेगा. Therefore पावर मोर. समझ में आ गया? जब थिकनेस बढ़ती है ना, तो पावर बढ़ती है लेंस की. आपने देखा होगा आई साइड पावर ग्लासेस में, किसी की पावर ज्यादा होती है तो ही हैज टू वेयर द थिक लेंसेस. लेस फोकल लेंथ, मोर पावर. हैव यू ऑब्जर्व? पावर कम है तो थिन लेंस रहता है. कन्विंस्ड और नॉट? Yes, sir. Goes up, focal length goes down, power goes up.
Moving to the next questions. क्या होता है जैसे अपना आई साइट है, when we see the distant object we need the different focal length, when we see the close object different focal length. So muscles, ciliary muscles, they keep on changing the radius of curvature and hence focal length, and hence we can see the objects properly. Such that images, every time image is formed at the retina. Okay. Combination of lenses अपने course में है. So why do we use the combination of lenses? To change the power. Suppose we don't have the what is called power, don't have the power or focal length, sudden focal length. So we can combine the two lenses to get the decreased focal length. Decrease होती है. For example, convex lens की बात करें या concave की भी. Convex में first will converge and second will further converge. We'll get the decreased focal length and increased power. जब आप पावर ग्लासेस के लिए जाते हैं तो जो डॉक्टर्स हैं और टेक्नीशियंस व्हाट दे डू, दे पुट द कॉम्बिनेशन. एक लेंस डालेंगे सामने उनके फ्रेम जो रहता है, फिर दूसरा लेंस डाल के बोलते हैं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा ठीक से. तो व्हाट दे डू, दे कंबाइन द टू लेंसेज and finally find the power of the lens, कितना पावर है ना. So we can use the formula, lens formula to get the combined focal length of two lenses. First lens के लिए image यहाँ पे बन रही है I1. We are using the lens formula for lens A. I1 is the distance V1. Image distance is V1 here. U being the object distance, F1 being the focal length of first. Second lens के लिए I1 will act as a object. उसके लिए ये object का काम करेगा. That will be U, and finally image is at I, that is V. So 1 by V minus 1 by U means V1 here. V1 will act as the object. तो फोकल लेंथ 1 by F2 दोनों ऐड कर दिए तो V1 1 by V1 वाला टर्म कैंसिल हो गया. 1 by V और ये 1 by U माइनस में है. राइट हैंड साइड बोथ आर एडेड. नाउ इसको थोड़ी देर के लिए जूम कर लो. सिंगल लेंस है ये, इसका फोकल लेंथ F है. तो दिस इज U, दिस इज V. तो सिंगल इक्वेशन आ जाएगी उसकी 1 by V minus 1 by U इज इक्वल टू 1 by F. थर्ड एंड फोर्थ से दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी. तो वी गेट दिस रिलेशन. For more than two lenses, it will be this relation will be adding up in the reciprocal form. 1 by F1 plus 1 by F2 plus 1 by F3 plus 1 by F4 and so on. Since focal length and powers are inversely proportional, 1 by F will be P, F1 will be P1, 1 by F2 will be P2 plus P3 and so on. Use the sign convention for focal length. अगर concave है तो आपको focal length negative put करना पड़ेगा. Clear? Your derivation. In contact, lenses should be in contact. If they are not in contact, this formula will not be used. Then we can use 1 by 1. कल हमने किया था वो 3 lenses gap में थे. 3 lenses were there, but they were in gap. एक में 5 centimeter का, एक में 10 centimeter का. So we have used the derivation method to solve the problem. First lens was making the image, and that image was object for the second lens, and so on.
You have to go back to basics if they are not in contact. ठीक है, दोनों लेंसेज कांटेक्ट में है, व्हाट यू कैन डू, आपको बोला जाए ऑब्जेक्ट इज एट सो एंड सो डिस्टेंस, व्हाट इज द फाइनल इमेज, तो इंटरमीडिएट इमेज निकालने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आपको कंबाइंड फोकल लेंथ निकाल लीजिए और assume that it is a single lens. Use the formula, lens formula 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. After getting this for f. ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, if you see this question, can you see two thin lenses, concave and convex, one is convex, other is concave, each of focal length 10 centimeter are in contact, find the net focal length and net power. नेट फोकल लेंथ निकालनी है, तो ये फार्मूला यूज कर लीजिए, और पावर के लिए 1 by f, नेट पावर के लिए 1 by नेट फोकल लेंथ। क्या आंसर आ रहा बोले? Are you there? Yes, sir. Okay, simple question, quick answer, then we can solve one more question, then we'll wind up. बोलिए फास्ट, दोनों इक्वल है बट वन विल बी माइनस, है ना, तो ये ऐसे आएगा आंसर, 1/10 minus 1/10, 0 आ गई फोकल लेंथ, नहीं 1 by f is 0, so focal length will be infinite, power will be 0, it will act as a simple flat plate, no power, no converging, no diverging, one is converging in fact, other is diverging, and net effect is 0, parallel lens will go parallel to parallel, ठीक है, and what about this question? What is the focal length of convex lens of focal length 30 in contact with the concave lens of focal length 20? Is the system converging or diverging? Ignore the thicknesses of the lens. तो वैसे करेंगे लेंस फॉर्मूला लगा के, आई मीन लेंसेज इन कांटेक्ट, क्या आ रहा बोलिए? f1 is 30 है ना, f2 कितना? -20. Yeah, so 1 by f is equal to 1 by f1 plus 1 by f2. 60 is the LCM, 2 minus 3, so minus 1 by 60. So f is minus 60 centimeter. तो आंसर क्या होगा? कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? So diverging. Diverging. Yeah, diverging length of what is called focal length minus 60. Now इसका second part बताइए. If object is placed at distance 60 centimeter
from combination then find image distance from lens. बोलो क्या आएगा? What will be your answer? This is the question number 10 of your this chapter. कितना आ रहा है? 30 सेंटीमीटर 30 centimeter, sir. प्लस या माइनस? Sir, plus. यस, ये रिजल्ट भी हमें पता है। जब कॉनकेव लेंस के फोकल लेंथ के डिस्टेंस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो हाफ ऑफ द फोकल लेंथ पे डिस्टेंस, हाफ ऑफ द फोकल लेंथ पर इमेज बनती है और कॉन्वेक्स में इंफिनिटी बनती है। ये हमने शुरू में क्वेश्चन किया हुआ नहीं, प्रीवियसली वी आर डन, दिस टाइम वी आर नॉट डन। तो 1/v निकालना है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। रियल ऑब्जेक्ट है 1/60 और ये फोकल लेंथ नेगेटिव आ गई, तो 1/v इज माइनस 1/60। समथिंग इज रॉन्ग, इज इट ओके? Something has gone wrong. 1/v minus 1/u. Okay, ये माइनस सेम साइड में बनेगी प्लस। ओके, ऐसे आएगा देखो यहाँ पर। ओके, आई विल शो यू विद द डायग्राम। इट इज ओके, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। सेम साइड में बनेगी। 2/60 will become minus, so v is equal to minus 30 centimeter. So can we check it with the diagram? Yes, we can do it. देखो ऐसा आएगा डायग्राम, ऐसा मिरर में एक मिनट, लेंस में